Online guys, can you hear me? Yes, sir. Okay, I'm sharing my screen. Let me know once you see my screen. Can you guys see my screen online? Yeah, it's visible, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Right. Okay, so in the last session, what we have discussed, lookups के बारे में we have spoken, right? X lookup क्या होता है, H lookup क्या होता है, V lookup क्या होता है, right? Any questions there? जो assignment दिया था उसमें any questions? All good? Yes, sir. Okay, right. If you know questions, then we will move forward. Let's see about data validation. Okay. Data validation क्या होता है? This is nothing but a set of rules. Give particular cells. मतलब क्या होता है? For example, जहाँ पे data entry होता है, okay, manually if people are entering the data into Excel without having any kind of ERP machine के अलावा, sometimes people will be entering data manually into Excel, right? जैसे कि for example I have something called serial number, name of the student, maybe state, या फिर ऐसे there are some columns are there, some certain columns are there, maybe कौन से course, preferred course क्या है, preferred timing क्या है. For example, for some students have came for the inquiry कि they want to learn some course through Talentele, for example. Okay, so front end में जो बैठ रहा है, maybe they would like to take some kind of information. They need to gather some information so that follow up के लिए वो सब के लिए काम में आएगा. So what will happen? Maybe there are 2-3 people who are doing the same thing. ठीक है? So for example, some student has come up for a course called data analytics inquiry के लिए आया. So there was a person one who entered as data analytics. उसके बाद इवनिंग शिफ्ट में जो है, मे बी दैट गाय और गर्ल माइट बी एंटरिंग जस्ट डी है. ऐसे डिफरेंट वेज में दे आर एंटरिंग द डेटा, बट मीनिंग इज द सेम ओनली. So this is going to create some problem for us during analysis, as I told you earlier. तो इसको कैन वी डू समथिंग कि एंट्री करने के टाइम पे ही वी कैन फिक्स दिस वन. ओके, मतलब इफ दे आर एंटरिंग इन दिस वे, लेटर ऑन हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा क्लीनिंग करना पड़ेगा. We need to standardize this one, right? But before they enter the data, if I give certain rules, okay, जैसे कि यहाँ पे फोन नंबर है, maybe they are entering 99887766 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये फोन नंबर है.
फॉर एग्जाम्पल बाई मिस्टेक एक नंबर कहीं पे मिस हो गया है. ओके, नाउ कनेक्टिंग विद दिस पर्सन विल बी वेरी डिफिकल्ट. हमें फोन नंबर फाइंड आउट करना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, राइट? सो अगर मैं कुछ सेट ऑफ रूल्स यहाँ पे मैं पास करता हूं कि डेफिनेटली यू नीड टू एंटर 10 कैरेक्टर्स, 10 से कम भी नहीं लेना चाहिए, 10 से ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए. इफ यू आर बाय मिस्टेक एंटरिंग 11 कैरेक्टर्स, जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पे एक एरर मैसेज आना चाहिए. If you are entering less than 10 characters, error message आना चाहिए, so that the person who is entering, they will understand some error I am doing, right? So those kind of rules we can set for each cell by using a concept called data validation. ठीक है? जैसे कि for example scores are there, student and scores can never be more than 100, right? एक सब्जेक्ट का scores for example स्कूल का है something, they cannot be more than 100. ओके, सो वी विल सेट ए रूल सेइंग दैट कि इस सेल में आप 0 से 100 के बीच में ही रख सकते हो. मोर देन 100 यू कैनॉट एंटर. देयर कुड बी 11th एंड 12th, जैसे 75 मार्क्स का स्कोर होता है या 60 मार्क्स का स्कोर होता है, देयर वी कैन से दैट मार्क शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 या फिर बिटवीन दिस एंड दिस ओनली. ऑल दोस काइंड ऑफ रूल्स वी कैन गिव टू ईच सेल. Okay, so giving the rules to each and every cell is nothing but data validation. Following? Clear, sir. Right. Now let us try to see what are the different options we have in data validation. For example, yahin pe, how to validate the data? You will select the cell. You can select group of cells also. Okay, group also you can select. Go to home. Okay, ribbon में जो data tab है, you go to the data tab and here you see something called data validation. ठीक है? The first one is data validation. Click on the data validation, you will get some things. अभी यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है? Allow any value. अभी the rule default value what is there? Any value. You can put a text value, you can put a date value, you can put an integer value. कुछ भी आप यहाँ पे enter कर सकते हो, right? Default जो है. Now I want to change the default settings. ठीक है? Default settings जो है उसको मैं change कर रहा हूँ. चेंज करके मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे होल नंबर ही देना है. ओके, यू नीड टू एंटर ओनली द होल नंबर. सो व्हेन आई से होल नंबर, उसके बाद आई एम गेटिंग सम मोर ऑप्शंस. ओके, होल नंबर जो आपको पास करना है दैट शुड बी बिटवीन टू नंबर्स या नॉट बिटवीन दीज नंबर्स, या फिर इक्वल टू यही होना चाहिए या नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए, ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, लेस देन दिस होना चाहिए. लाइक दिस सेट ऑफ रूल्स आई कैन पास. फॉर एग्जांपल आई विल गो विद बिटवीन. Okay, so I am saying the mark should be minimum 30, 34 and maximum 100. मतलब only pass candidates का marks ही यहाँ पे store होना चाहिए. Right? I am saying रो नंबर 2 से लेके रो नंबर 17 तक B column पे you have to enter only the whole numbers only. That whole numbers also should be in between 34 and 100 only. Right? When I click on OK, and now if you see, if I enter 34, whether it is going to take 34 or 100 के बीच में, so including that value. But if I enter 33 here, it is throwing me an error message. Right, what it is saying, the value does not match the data validation restrictions defined for this cell. इस particular cell के लिए हमने जो rule mention किया है, this is not satisfying that rule. Right, if suppose I enter 101, still it will throw me the same error because I am not giving the value within the rule जो मैंने specify किया है. So they, even though by mistake if somebody is entering the value which is not supposed to be here, it will not take it. Right? Online, following? Yes. Yes, sir. Clear. For example, I am instead of 34 की जगह मैं negative value दे रहा हूँ. It will not take unless until the rule satisfy नहीं होगा, तब तक वो value नहीं लेगा. Okay, in this way what we can do, जब data entry होता है उसी time में ही we can clean a lot of data.
रादर देन गलत एंट्री हो गया उसके बाद हम लोग क्लीन करेंगे, उससे बेहतर ये होगा कि वी आर सेटिंग अप द रूल्स सो दैट दैट रूल्स को सेटिस्फाई करने से ही डेटा इनपुट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद भी देर कुड बी सिचुएशन जहां पे हमें और क्लीनिंग करना पड़ सकता है, बट दिस विल मिनिमाइज योर क्लीनिंग वर्क। ओके, राइट। सो सिमिलरली दिस वाज इन बिटवीन, अभी जो मैंने रूल लिखा है उसको मुझे चेंज करना है। ओके, आई हैव गिवन ए रूल 34 से लेके 100 के बीच में करना है। इफ आई गिव सम टेक्स्ट वैल्यूज ए बी सी, स्टिल इट विल नॉट टेक। Okay, it has to be a whole number and it has to be between this and this. For example, if I give something like 35.234, still it will not take. It is in between 34 and 100 only, but still it is not taking. Why? It is not a whole number, right? Okay, right. Now I want to change this one. For example, select the entire cells, again go to data, again go to data validation. अभी जो होल नंबर है, आई कैन चेंज दिस वन टू डेसिमल नंबर। ओके, डेसिमल नंबर इन बिटवीन 34 एंड 100 में बोलूंगा तो क्या होगा? नाउ इफ आई गिव 35.12, इट विल टेक। ओके, राइट। सिमिलरली again go there and say data validation. I can say whole number, instead of between I will say it should be greater than a specific number, 34 से ज्यादा ही होना चाहिए, राइट। एक सिंगल क्राइटेरिया अगर आपको देना है, यू कैन से ग्रेटर देन 34। सो इफ आई गिव नाउ दिस इज व्हाट, ये गलत है, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी एंटर हो चुका है। ओके, सो इट इज एन एरर, बट अगेन इफ यू गिव दिस वन इट विल नॉट टेक, राइट। For example, there are, okay, let me do one thing. Data, I'm giving any number, any value. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग randomly some values we are going to enter. 35, 66, 75, 29. Okay, randomly some numbers I have given. This also let us make it 35. Okay, now again I am going there and giving a data validation. I am saying whole number, it should be greater than 34. Okay, but already there are so many values which are not greater than 34. Now I want to find them, जो कि क्योंकि मैंने पहले एंट्री कर दिया है, उसके बाद रूल सेटअप कर रहा हूं। अगर पहले ही रूल सेटअप करता तो these values it will not take at all, right? But now what is happening, I have already entered the value, उसके बाद मैं रूल impose कर रहा हूं, so it is not impacting. But what I can do, अगर यहाँ पे 17 cells है, for example I have 10,000 cells and all, now I want to find out which are the values which are not satisfying my rule, जो रूल मैंने बाद में implement किया है, right? So what I can do, you can select everything, go to data validation, and you can say circle invalid data. When I do circle invalid data, क्या हो रहा है, जो भी रूल मैंने दिया था, if it is not satisfying, okay, those will be highlighted, right? अगर ऑलरेडी डेटा है उसमें से भी we can find out कि which are the things which are not satisfying my new rule. Following online? Yes, sir. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे जितने सारे वैल्यूज है विच आर नॉट ग्रेटर देन 34, एवरीथिंग हैज बीन हाईलाइटेड, राइट। तो एक बार हाईलाइट होने के बाद वी कैन करेक्ट इट, मे बी दिस, यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी होगा, वी कैन चेक विद देम एंड वी कैन से मे बी दिस गाय इज नॉट 34, दिस गाय इज 64। तो एज सून एज आई चेंज द नंबर, वो हमारा हाईलाइट जो हुआ वो भी हट जाएगा, क्योंकि नाउ इट इज फॉलोइंग माई रूल्स।
right? Wherever it is, when once you change it and if it is satisfying, then it will remove that circle part also. Following guys online? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. And even you can select everything and say clear validation circles. मगर मतलब मुझे बस देखना था कौन से वैल्यूज है. once I understood what are those, I want to remove the highlighting things. वैल्यू वही रहेगा but I can remove the circles. किसको जितना भी यहाँ पे पहले से वैलिडेशन करते थे तो वो सब नहीं आता, तो अभी जो सब है उसको निकालना पड़ेगा. 27 वगैरह है तो हाँ, you can only highlight it. If you want to remove it, you need to edit it. You want to remove these values, you are saying ये 20 जो है, ये 29 जो है, 34 ये सब you want to remove it, right? So definitely you need to change it manually. Okay? ये बस आपको दिखाएगा कि कौन से values आपने गलत एंट्री किया है. Now you need to find out a way कि इसका value actually क्या होना चाहिए. And then you need to enter those values. Okay? Right. Similarly, these things you can understand, right? इसमें से क्या करना है, between दूंगा तो क्या होगा, greater than क्या होगा, less than, it is the same thing only. जो rule आप दोगे उसके हिसाब से it will take the values, right? Similarly, for example, we have some courses, ठीक है, जैसे data analytics हो गया, I want to show the DA, data engineering हो गया DE, data science हो गया DS, business analytics हो गया BA. Like this I want to give some list ताकि no need of entering the data here, enter करने की जरूरत नहीं है. ओके, जस्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन आना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने से जो preferred course it has to be selected, right? So what we can do here is you can select the cells. For example, I will select up to 10, go to data validation. Now instead of any value I will go with list. ठीक है, मतलब list of values मुझे चाहिए. I can go with list and यहाँ पे source के जगह पे I can type DA, DE, DS, BA. Okay, I have given 4 values, right? And then click on OK. Now what will happen, जहां तक हमने cell select किया था वहां पे all those 4 options will come in your drop down, so that कोई भी enter कर रहा है, no point of entering them, they will just come here and select the drop down. So no, यहाँ पे कुछ भी मतलब everything is standardized already. Whoever enter, there are 3-4 different people also, they have to select one out of these 4 only, right? Yes, no? Yes, sir. But for example, there are many values are there. मतलब यहाँ पे 4 ही courses है, that is fine. For example, something I want to show products. Okay, मेरे पास बहुत सारे products है, like P1 से लेके P10 या फिर P20, P30, ऐसे 30-20 products है. So it will be difficult, right? कि हमें product का नाम अगर हम type करने लगेंगे, if I start typing all the products name here, it is going to be very difficult for me, right? So You can put the cell number. sorry, Sir, can I put the cell number? that's what I am saying. I'm showing that one. Okay. So agar instead of inputting the values manually, what I can do here is, for example, let me remove this data validation. Data validation. Instead of giving this one, what I can do, I can reference the cells. यहाँ पे source में जाके I can reference it. मैं बोल सकता हूँ कि इन चारों को लेने के लिए.
Okay, so when I select this one, I am referencing those cells and saying okay. So it will be the same now also, right? But for example, आपका जो reference है उसमें अगर duplicates है, okay, if there are duplicates in your cells, okay, at that time क्या होगा? If I am having duplicates, then what will happen? Here also duplicates will appear. Okay, आपके cells में अगर duplicate जैसे for example, okay, these are my categories, subcategories, product ये सब है, right? मेरे categories 3 categories है. Actually देखा जाए तो I have only 3 categories. What are they? Furniture, office supplies and technology. Now I want to put a data validation यहाँ पे. For example, यहाँ पे मेरा category के related 3 category यहाँ पे आना है. Okay, so what I will do? I will go with data validation. I will go with list. Source क्या होगा मेरा? Category. Category यहाँ पर. Okay. So if I select this entire thing and then say okay, what will happen? I will get the same thing again and again, again and again. Right. So आपको पहले क्या करना पड़ेगा? You need to remove the duplicates. आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? You can select this entire thing. Go to a new sheet. Paste it here. अब यहाँ से डुप्लीकेट कैसे निकालते हैं? Go to home tab. Same go to data. ये जो data validation के ऊपर एक है ना, this says remove duplicates. Okay. When you select everything and say remove duplicates, what will happen? आपके सारे duplicates हट जाएंगे. You will get only the unique values. Right. Now you can use this one. Okay. Now you can use this one as your data validation. Okay, ताकि आपके पास only you will get the unique values only. If अगर आपके पास बहुत बड़ा मतलब डेटा है and you have multiple values, duplicate values are there, first you need to create a column जहाँ पे duplicates नहीं होंगे, unique values होंगे, and use that as a reference for your list, right? Following? Yes, sir. Okay, this will be very useful. Let me ask you one question. मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? ये डेटा है मेरा जहाँ पे I have all 3 categories. Okay, furniture का है, office supplies का है and technology का है, right? I want to know what is the total sales of furniture. Okay, furniture का total sales क्या है यहाँ पे? मतलब if I select something here, I need to know the total sales of furniture and total profit of furniture. If I change फर्नीचर से अगर मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज करता हूँ, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सेल्स क्या है और प्रॉफिट का सेल्स क्या है आना चाहिए. हाउ यू विल गेट दिस वन? यूजिंग वी लुकअप. कैसे करेंगे? हाँ, कौन करे एक हुआ मत है. What I should do? Okay, we look up. This one. Okay.
Okay. Column index number सेल्स कौन सा सेल होगा? $18, right? Okay. ओके, सब में क्या करेंगे? What is the range? Okay. Let us see. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए? फर्नीचर का सेल्स चाहिए, राइट? वी नीड फर्नीचर का सेल्स. तो वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप विल ब्रिंग द डेटा फ्रॉम ए डिफरेंट प्लेस टू ए current place by matching the number, by matching the lookup value. बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे? वी नीड द ओवरऑल सेल्स वैल्यू चाहिए. मतलब सेल्स कॉलम को सम करना है बेस्ड ऑन वन कंडीशन, दैट इज फर्नीचर, राइट? वी जस्ट नीड टू एड अप ऑल द सेल्स वैल्यूज जहां पे कैटेगरी इज फर्नीचर होना चाहिए. So this is just a simple sum if only. You no need to do any kind of VLOOKUP and all. If you do a sum if, it will come, right? Sum if का काम क्या है? If suppose I do it here, sum if, what is the range? हमें किसका सम करना है? सेल्स का सम करना है, राइट? कॉमा, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कैटेगरी इज इक्वल टू फर्नीचर होना चाहिए. How do we give this? नहीं, सॉरी. हाँ, राइट. तो ये जो रेंज है, सम सेल्स का रेंज नहीं है, कैटेगरी का रेंज है. ओके, कैटेगरी का रेंज है. इस रेंज में आपका क्राइटेरिया अगर फर्नीचर आ रहा है, दैट इज नथिंग बट दिस वन, दिस आ रहा है, देन सम रेंज आपको क्या करना है? सेल्स कॉलम. Now what is the value I am getting? Furniture का 741,998, that is what I am getting, right? So let's see whether it is correct or wrong. कैसे चेक करेंगे? We will filter the furniture, and now if you see the sales, what is the value? 741,998. Same thing we are getting, right? For example, instead of furniture I will take technology. तो मेरा क्या आना चाहिए? 836,154 आना चाहिए, right? 836,154. Let's see. So instead of furniture, if I select here technology, it should be 836,154, right? Instead of technology, if I take office supplies, accordingly I should get the sales of that one. Okay, जब real time में you need to combine the data validation को, VLOOKUP को, SUMIF को, all this combine and you need to give the result. They will ask you like this. वो क्या बोलेंगे कि मुझे एक डैशबोर्ड चाहिए यहाँ पे, जहां पे I need the category sales, profit, quantity, discount. ओके, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉप डाउन चाहिए. ओके, हियर आई नीड ए ड्रॉप डाउन. ड्रॉप डाउन कैसे करेंगे? लिस्ट लेके करेंगे. वी विल गो टू दिस. दिस इज माय ड्रॉप डाउन. So when that person comes and selects anything from the category, automatically these values should come according to the selected category.
Same thing he may ask for region also. Same thing he may ask for subcategory also. Same thing he can ask for product also. Right? So उसको डेटा के साथ कुछ मतलब नहीं है, वो डैशबोर्ड में आएगा, यहाँ पे जो सिलेक्ट करेगा उसके हिसाब से he needs to get the information. Once he gets the information, based on that he will take any kind of decisions. Right? Following guys online? Right. Okay, one assignment I am trying to give you. We will discuss more, but मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, उसका सेल्स प्रॉफिट. ओके, मतलब क्या है, I will tell you the issue and then you need to fix that one. सब कैटेगरी सारे मैंने यहाँ पे ले लिया है and I am pasting it here and I am removing the duplicates. ठीक है, these many duplicates removed, only 17 unique values are there in my subcategory. Right? Now category का data validation is this one. Right? Similarly subcategory का data validation मैं करूंगा and I will go with the newly created one, that is this one. Right? अभी अगर मुझे सेल्स चाहिए तो what we need to use, दो क्राइटेरिया है, sum if we need to use it. Right? Sum if. Okay, what is my sum range? Sales range. So this is my sum range. उसके बाद क्राइटेरिया वन रेंज क्या है, कैटेगरी. ओके, दिस इज माय क्राइटेरिया वन रेंज. उसके बाद क्राइटेरिया वन क्या है, यहां पे जो भी होगा दैट इज माय क्राइटेरिया वन. राइट, कॉमा. उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, सब कैटेगरी, दिस एंटायर थिंग. उसके बाद क्राइटेरिया टू क्या है, वॉट एवर इज सिलेक्टेड हियर, यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज माई सेकेंड क्राइटेरिया. राइट? उसके बाद बस उतना ही. राइट? वी हैव गिवन द सम रेंज, वी हैव गिवन द क्राइटेरिया वन का रेंज, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया का सेकेंड रेंज और उसका क्राइटेरिया वी हैव गिवन एंड वी विल क्लोज इट. ओके, नाउ व्हेन आई सेलेक्ट हियर फर्नीचर एंड हियर आई सेलेक्ट चेयर्स, आई एम गेटिंग द फर्नीचर के अंदर चेयर्स का वैल्यू क्या है, सेल्स क्या आ रहा है, how much we are getting, 328449. Let's go there. Furniture and chairs. Now sales अगर आप देखोगे कितना आ रहा है, 328449, 328449, which is correct. Right? सब कुछ ठीक है. बट स्टिल व्हाट दे में आस्क यू कि अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पे ओनली द डेटा, ओनली द सब कैटेगरीज विच आर रिलेटेड टू फर्नीचर ओनली शुड शो अप, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा फर्नीचर में जा रहा है, कौन सा टेक्नोलॉजी में जा रहा है. अगर मैं यहाँ पे कोई गलत सिलेक्ट कर देता हूँ, इट इज सेइंग जीरो. व्हाई इट इज सेइंग जीरो? फर्नीचर में स्टोरेज करके कुछ है नहीं. ओके, इफ आई एम सेलेक्टिंग फर्नीचर हियर, इसके अंदर यू डू नॉट हैव एनीथिंग कॉल्ड स्टोरेज. These are the only four categories, subcategories which are related to furniture. So ideally जब मैं यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सारे सब कैटेगरी नहीं दिखाने. राइट? I need to show only the subcategories which are related to furniture. अदरवाइज क्या होगा, अगर एंड यूजर को पता नहीं है, इफ ही सेलेक्ट समथिंग रॉन्ग, इट विल शो सेल जीरो. फोन्स का सेल जीरो लग रहा है, बट फोन्स इज देयर इन टेक्नोलॉजी.
राइट, दोनों सही सेलेक्ट करेंगे तभी हमको वैल्यू आएगा, राइट। सो वो गलती को भी हमें रोकना है। ओके, सो कैसे करना है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं, उसका रिलेटेड सब कैटेगरी ही इस ड्रॉप डाउन में दिखना चाहिए, ना ही कि सारे सब कैटेगरी नहीं दिखना चाहिए। इज द रिक्वायरमेंट क्लियर? यस सर। ओके, दिस यू ट्राई बाय योर ओन, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बट ट्राई बाय योर ओन। वाई आई एम गिविंग दिस वन इज रियल टाइम में भी ऐसे ही सिचुएशन होंगे जहां पे थोड़ा हमको आता है, थोड़ा हमको नहीं आता है, वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, थोड़ा बहुत रिसर्च करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। ओके, टू ट्राई दिस, मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, राइट। ओके, सो वी हैव सीन द डेटा वैलिडेशन ऑफ एनी वैल्यू जो डिफॉल्ट है, होल नंबर हमने देखा, डेसिमल हमने देखा, लिस्ट हमने देखा है। ओके, लिस्ट में टू टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, एक डायरेक्टली वैल्यू कॉमा देके लिख सकते हैं, या फिर एक रेंज को सिलेक्ट करके वी कैन गिव इट एज एन ड्रॉप डाउन वैल्यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देना है 10 कैरेक्टर्स का। ओके, सो फोन नंबर विल बी 10 कैरेक्टर्स ओनली, राइट? Yes or no? So what validation you are going to take it here? टेक्स्ट लेंथ। गुड, ओके, आपको क्या लेना पड़ेगा, टेक्स्ट लेंथ, एंड लेंथ शुड बी 10। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेटा शुड बी इक्वल टू, ओके, इक्वल टू यू विल से 10 एंड ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू आर गिविंग ए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे के अगर आपने छोड़ दिया, इट विल नॉट टेक इट। ओके, डेफिनेटली इट हैज टू बी 10 कैरेक्टर्स होना चाहिए, बट हाँ टेक्स्ट लेगा, दिस विल बी ए टेक्स्ट ओनली। आप अगर फोन नंबर का न्यूमेरिक लेके फायदा क्या है, फोन नंबर न्यूमेरिक स्पेसिफिकली वाई इट शुड बी न्यूमेरिक, अगर आप उसके ऊपर कुछ एग्रीगेशन करना चाहते हो, जैसे सेल्स हो गया, टोटल सेल्स आपको चाहिए, या मैक्सिमम सेल्स आपको चाहिए, या मिनिमम सेल्स आपको चाहिए, या एवरेज सेल्स आपको चाहिए। फोन नंबर में थोड़ी ना हम करेंगे एवरेज फोन नंबर क्या है, हाईएस्ट फोन नंबर क्या है, लोएस्ट फोन नंबर क्या है, टोटल फोन नंबर क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, right? So if this is text, it doesn't make it doesn't change any meaning. आपका फोन नंबर अगर न्यूमरिक हो, होल नंबर हो, या टेक्सचुअल वैल्यू हो, अगेन इट इज गोइंग टू बी द सेम नंबर ओनली, उसके ऊपर आप कभी एग्रीगेशन नहीं करोगे, राइट? ओके, सो इट कैन बी टेक्स्ट, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, sorry, 4 5 6 7, if you are giving like this also it will take, क्योंकि 10 कैरेक्टर्स है, तो आप न्यूमेरिक दो, टेक्स्ट दो, जो भी दो, अप टू 10 कैरेक्टर्स इट विल टेक। ओके, बट स्टिल वी आर अवॉइडिंग सम पार्ट ऑफ एरर को हम लोग रोक रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर मतलब पीपल विल अंडरस्टैंड इट इज ए फोन नंबर, सो दे विल एंटर द न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। कहाँ पे गलती हो सकता है कि वो एक नंबर मिस कर दिया है, या फिर एक नंबर ज्यादा लिख दिया है, तो दोज काइंड ऑफ एरर्स we may not allow it here, but 100% this is not proof। कोई अगर टेक्स्ट के साथ वो ऐड कर देगा then it is an issue only। okay, we are minimizing the errors, basically we are not able to do everything, but still we are minimizing the errors, right? yes, no? यस सर। okay, then these are all text length, आपको greater than कुछ चाहिए, less than कुछ चाहिए, equal to चाहिए, between इतना ही चाहिए, accordingly as per the requirement you can take it। okay, you can give date and time। okay, अगर आप डेट दे रहे हो, जैसे कि
ओके, इफ आई एम सेइंग डेट्स, स्टार्ट डेट आपका 1/1/2025 से लेके एंड डेट 31st December 2025। अगर मैं यहाँ पे 1/1/2026 दूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू टेक। आप एक रेंज ऑफ डेट्स भी मेंशन कर सकते हो कि मुझे इसी डेट्स के अंदर ही मुझे डेटा चाहिए। तो यू कैन स्पेसिफाई कि ग्रेटर देन दिस डेट होना चाहिए या लेस देन दिस डेट होना चाहिए, या फिर ये एक रेंज होना चाहिए बिटवीन दिस एंड दिस ओनली यू वांट टू टेक इट। दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन पुट इट इन द डेट्स आल्सो। अदर फ्यू थिंग्स आर देयर, जैसे कि इसी को लेते हैं। I will go with data validation text length equal to 10. Okay. If I am giving something less than 10, it is going to give a error message. But kya error message? It is not telling me. It is just saying the value does not match the data validation restriction defined for this cell. But actually, what is the issue I am doing? That it is not giving me. So what I can do here is I can give that error message also. ऐसे I can go this one, ये मेरा rule है, right? This is my criteria, and then I will go to the error alert. Okay, यहाँ पे 3 tabs है, settings है, input message है, error alert है। So error alert अभी क्या आ रहा है? Default जो आ रहा है वो आ रहा है, but I can customize this one. I can say error and say please enter a valid phone number. Okay, so error message मैं खुद दे रहा हूँ। So and when I click on OK, and now if I say 1 2 3 4 5, so it is giving me the error message जो मैंने input किया है, right? It is not giving me the default error message. It is saying कि आपने मतलब whatever we are giving here, I am saying that please enter a valid phone number. इसका मतलब जो enter कर रहा है उसको पता चलेगा कि I am not inputting the valid phone number, right? या फिर आप you can mention here entered value does not have 10 characters. Please correct it. Okay. So जो भी हम error मैसेज दिखाना चाहते हैं, that we can place it in the error alert. Okay, based on हमने जो भी criteria दिया, जैसे date का है, तो you can mention please enter the data after 2025 only. Okay, ताकि error मैसेज देख के the person who is entering the data, they can understand where exactly they are doing the mistake. Right? Following guys online? Yes, sir. Yes, sir. Right. Similarly, I can give an input message also. या फिर error alert में ही I can say maybe we will take this one. Okay. This one. Okay, let's see. So here I want मेरा data validation क्या है? It should be a whole number greater than 34. Okay, this is my rule. Error alert में मैं क्या दे रहा हूं? Value greater than 35, right? 34, right? तो यहाँ पे अगर मैं 33 दूंगा तो इट इज गिविंग मी द एरर मैसेज कि प्लीज एंटर द वैल्यू ग्रेटर देन 34 करके दे रहा है। बट व्हाट आई वांट इज
देयर कुड बी ए सिचुएशन, बहुत कम सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे वैल्यू कैन बी लेस देन 34 ऑल्सो, ओके, बट बहुत कम सिचुएशंस होंगे जहां पे वैल्यूज विल बी लेस देन 35 या 34 जो भी है, ओके। सो स्टिल आई वांट टू गिव देम ए वार्निंग, एंड यूजर को, मतलब जो एंटर कर रहे हैं उनको एक वार्निंग मैसेज में देना चाहता हूं कि आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हो दैट इज नॉट ग्रेटर देन 35। स्टिल यू वांट टू एंटर, आई एम गिविंग ए चांस टू देम। वो बोलेंगे हाँ स्टिल आई वांट टू एंटर, देन आई शुड अलाउ देम टू एंटर। मुझे एक वार्निंग देना है कि आप जो वैल्यू एंटर कर रहे हो वो 34 से बड़ा नहीं है। स्टिल यू वांट टू एंटर, इफ दे से हाँ आई वांट टू एंटर, देन आई शुड अलाउ देम, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, you can go here, go to data validation. Here I can say you are entering a value which is not greater than 34. Okay, like this I am giving a error message saying okay. Now अगर मैं यहाँ पे 33 दूंगा तो it will throw me that message, are you are entering a value which is not greater than 34, do you still want to, टॉप लिख दिया, हाँ, जो स्टिल वांट टू एंटर, ओके। सो हियर मुझे एक ऑप्शन होना चाहिए जो अगर वो यस सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे वैल्यू एंटर करने को अलाउ करना चाहिए, अभी नहीं कर रहा, ओके, इट इज स्टॉपिंग, इट इज नॉट अलाउइंग इट, बट व्हाट आई कैन डू हियर इज इंस्टेड ऑफ स्टॉप, ये स्टाइल क्या है, स्टॉप है, इंस्टेड ऑफ स्टॉप आई कैन सेलेक्ट वार्निंग, ठीक है। स्टॉप क्या करता है, इट विल स्टॉप यू, इट विल नॉट अलाउ यू टू एंटर, बट अगर मैं यहाँ पे वार्निंग लेता हूँ, ये एरर अलर्ट में अगर मैं वार्निंग लेके ओके करता हूँ, नाउ इफ आई एंटर 33 इट इज गोइंग टू गिव मी ए वार्निंग, ओके। क्या वार्निंग दे रहा है, यू आर एंटरिंग ए वैल्यू विच इज नॉट ग्रेटर देन 34, डू यू स्टिल वांट टू एंटर, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अगर मैं यस बोल देता हूँ इट विल टेक इट, ओके, इट इज जस्ट गिविंग ए वार्निंग कि आपको करना है क्या। इफ यू आर सेइंग यस देन इट विल अलाउ, इफ यू आर सेइंग नो इट विल नॉट अलाउ, okay. Similarly we have this point, everybody understood online? Yes, sir. Right. Similarly we have another option called warning की जगह पे I have something called information, okay. Title आप accordingly change कर सकते हो, information, same information I am passing, I am saying okay. तो यहाँ पे अगर मैं 32 दे रहा हूँ, what it is saying, you are entering a value which is not greater than 34, do you still want to enter? When I say okay, it will take it. So what is the difference between information and warning? दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, right? So what is the difference between information and warning? Technically there is no difference between warning and information. It is just a kind of psychology type. अगर आप warning मैसेज देखते हो तो you will be more cautious. Okay, अगर आपके स्क्रीन पे एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, दैट मींस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, यू विल बी पुटिंग मोर एफर्ट ऑन दिस वन, ये क्यों आ रहा है। इफ इट इज अ इंफॉर्मेशन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं कि आप इससे बड़ा नंबर आप एंटर नहीं कर रहे हो करके, यू वांट टू एंटर यू कैन गो इट, ओके, बट टेक्निकली बोथ हैव द सेम मीनिंग, ठीक है, राइट, यस नो? Yes, sir. Yes. Similarly एक और ऑप्शन है, या एनी क्वेश्चन? ओके, तो सेटिंग्स हमने देख लिया है, एरर अलर्ट हमने देख लिया है, राइट। इनपुट मैसेज में क्या होता है, यू कैन गिव सम मैसेज, यहाँ पे प्लीज एंटर ए वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 34। तो इनपुट मैसेज क्या करेगा, यहाँ पे आप जब मतलब यू सेलेक्ट करोगे, इट विल गिव यू एन इनपुट मैसेज कि आपको करना है, इसमें क्या एंटर क्या करना है, ओके। इफ यू वांट टू गिव ए मैसेज टू देम,
जहां पे भी हमने डीप मतलब डेटा वैलिडेशन रूल सेट किए हैं, वहां पे एक इनपुट मैसेज दिखा सकते हैं कि प्लीज एंटर ए वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 34, या जो भी आप मतलब रूल्स लिखे हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन पुट इट हियर, ताकि जब मैं एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि मुझे एंटर करना क्या है. ओके, फॉलोइंग? Yes, sir. ओके, दैट इज ऑल अबाउट योर डेटा वैलिडेशन. एक सेटिंग्स होता है जहां पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लिख सकते हो. उसके बाद एक इनपुट मैसेज होता है जो कि दिखेगा कि जो एंटर करने वाला है उसको क्या करना है. उसके बाद एरर अलर्ट दे सकते हो, जहां पे अगर इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स क्या मैसेज आना चाहिए, वार्निंग दे सकते हो या फिर इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो. राइट? ओके, द वन विच आई हैव गिवन यू द असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट मैंने दिया है आपको, यहाँ पे यू नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड, you may have to use this custom one. Okay, that I have not explained. So by using this one you can do it, या फिर if you are finding a different way that is also fine. But मेरा requirement क्या है, whatever the category I am going to select, only those category related subcategories only should be visible here. Okay, that is the requirement. Try to do this. If not, I will explain you how to do. Okay. Okay, sir. Right. Okay, then let's close for today. And in next session we will talk about the कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हम कलर कोड कैसे करते हैं, नंबर्स के ऊपर कलर कोड करना है, मुझे इससे बड़ा नंबर है तो इस कलर में आना चाहिए, नेगेटिव नंबर्स है तो रेड कलर में आना चाहिए. ओके, हाउ टू डू दोस काइंड ऑफ कलर कोडिंग, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेशन. राइट. Okay, then I am closing for today. Thank you guys. Thank you. Yeah. Yes, sir.